Good morning, all of you. Good morning to the online students as well. Yes, any doubts from the previous class? Yes, any doubts? No doubts there? Fine. So, in the previous class, we had discussed why and how aspect. Yes. Ajay, everyone is clear with the concept of authority? There was not much. Authority मतलब क्या है? Respect for power. You are respectful for somebody in the position of power. है ना? तो इसी और रेस्पेक्ट कहाँ से आएगा? लेजिटिमेसी. अगर आप सोचो कि जो इन पावर है, दे आर जस्ट, they are doing what is right for the country, they are doing taking decisions for the welfare of the citizens. Fine. So it is in this context we have the meaning concept of authority. Fine. Today we are starting with the topic of preamble. Preamble to the Constitution of India. What do you understand? Yeah, what do you mean by preamble, first of all? Yes, it refers to summary of the Constitution. What else? Yes, it is preface. Preface मतलब क्या होता है? Introduction. It is sort of an introduction to the Constitution. What else? Short form नहीं बोलेंगे, summary ठीक है. हाँ, values. It is an introduction to fundamental values, fundamental nature and nature of Indian state, values of Indian Constitution. और बताओ. Yes, it is the summary or it is the essence. We also use this word quintessence. It represents quintessence मतलब जो एकदम essential features है. Yes, very essential features of the Indian Constitution is represented through the preamble. Anything else? Yes, it has been referred to as the soul of the Constitution. What else? What version? Modified. No, we'll not say modified. Modified can be the Constitution is something else and the preamble is something else. है ना? Modified मतलब हो गया. Summary, essence, preface to the Constitution. We also use soul. मतलब वही है, summary, essence है ना? We also call it keynote to the Constitution. It is an introduction, है ना? Preface to the Constitution. Anything else? हाँ, sorry? इंस्पिरेशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्पिरेशन नहीं है क्योंकि पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया फिर प्रियम्बल लिखा गया. तो इंस्पिरेशन तो पहले आता, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता. तो इट इज नॉट एन इंस्पिरेशन, इट इज अ समरी. गाइडलाइंस वही है. समरी, एसेंस, क्विंटेसेंस, प्रीफेस आर द बेटर वर्ड्स. की नोट, सोल, है ना? गाइडलाइन भी ऐसा लगता है कि गाइडलाइन विल कम फर्स्ट एंड देन विल कम द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, सो नॉट विल नॉट यूज द वर्ड गाइडलाइन ऑल्सो. यस, दीज आर द वे. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बताता है? बताओ. स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब होगा, कल हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स, तो वहां पे पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा? पार्ट्स.
पार्ट्स के अंदर यू हैव आर्टिकल्स, है ना, यू हैव स्केड्यूल्स. तो ये है स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये एसेंस है. यस यस. नहीं, it is not the objective only, है ना, it is the essence. Objective is very narrow. Objective to aim of the constitution, which is correct. It tells us about the kind of India that the constitution makers wanted to establish. But objective is narrow. It is the entire essence of the constitution. पूरा constitution का summary है ये. Conclusion नहीं, अभी ये सारे शब्द नहीं यूज करेंगे. आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, आइडियोलॉजी ठीक है, एक तरह का आइडियोलॉजी मतलब यही होता है कि थॉट प्रोसेस, है ना. तो एसेंस ही रिफ्लेक्ट्स द थॉट प्रोसेस, लेकिन है ना, आइडियोलॉजी इज नॉट द राइट वर्ड टू बी यूज्ड. फिर वो क्या बोल रहे थे, फिलोसफी. फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वही है, फिलोसफी, आइडियोलॉजी, ये सब एसेंस को ही डिनोट करता है. बट द बेटर वर्ड्स is what we have already mentioned, and we will not use these words. Fine. ये fine. So this is with respect to the preamble of the constitution. Preamble of the constitution is nothing but the essence, the core, the summary, the preface to the constitution. आप कोई भी किताब पढ़ते हो उसके पहले एक प्रीफेस लिखा होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है. यस. एंड व्हेन इट कम्स टू इंडियाज, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई थिंक सो देयर इज अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज from yesterday's topic, balanced institutional design of constitution. There it was that the constitutions are not subverted by the masses, but it is subverted by small groups. So ma'am, who are these small groups? How do these small groups subvert it? Yes, in yesterday's notes we have mentioned with respect to the institutional design that the constitution is not subverted by masses, rather by small groups. So I had given you the example there. For example, military coup. Yes. So military coup. Military is not the entire nation. It is relatively a smaller, much smaller group compared to the entire country. And the military trying to impose its rule on the people and doing away with the civilian government. Civilian government generally किसके basis पर rule करेगी? Constitution के basis पर, है ना. तो 1974, let me give you an example of Pakistan. 1974, they adopted the first civilian constitution. Yes, and it was 1978-79 government. Yes, a military dictator had Ziaul Haq had come to power. So he came by subverting the civilian constitution, है ना. तो वही है कि a threat to the seamless functioning of the constitution is generally not from the masses per se. Masses will rise against the constitution if the constitution is found to be very very unjust. और masses कभी खुद से generally नहीं rise होती, है ना. तो there will be for example in Nepal, I told you, recent most constitution is their 6th formal constitution. और ये कॉन्स्टिट्यूशन किस कंटेक्स्ट में अडॉप्ट हुआ था? इन कंटेक्स्ट ऑफ माओइस्ट इंसर्जेंसी. सो जो उनका 5th कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको थ्रेट किससे आया? अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द लार्जर नेशन, दोज वर माओइस्ट. आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में parliamentary form of government gets converted into executive presidency. In 1978, they adopted a new constitution under Jayawardene, which concentrated power in the president, and president was Jayawardene. Yes, so these है ना, तो ये हैं small groups, and small groups, these small groups, it cannot be any group. Yes, अभी एक large country है, उसमें कुछ लोगों ने एक group बना लिया और कहा हम subvert करेंगे constitution. ऐसे नहीं होगा.
that group should have power to subvert, है ना, they should hold some power. इतना आसान थोड़ी ना constitution subvert कर देना. Yes, so they will hold some power whereby they are able to enforce. जैसे मिलिट्री जब कू करती है तो एट गन पॉइंट करते हैं ना. म्यांमार में अभी रिसेंट February 2021 में जब कू हुआ तो क्या हुआ, मिलिट्री केम एंड अरेस्टेड ऑंग सैंग सू की, वहां की जो लीडर थी उसको अरेस्ट कर दिया. Yes, and other leaders of the parties were arrested, the other elected members were arrested and put behind bars. तो वो है ना, these are the small groups. These are small groups such as military, है ना, such as the president, maybe the, है ना, the executive is unhappy with the parliament is unhappy, है ना, ऐसे ऐसे करके these groups which come to subvert power. Small groups which enjoy some power concentration. अब Maoist insurgency हुआ तो they were common people, but by this time, है ना, Maoist का genesis नेपाल में होता है 1995 में. उसके बाद 2006 में जाके they were able to create a situation where they said कि now there is a need for stability in Nepal. The king is not performing. Let us abolish monarchy. And all the actors got together. ठीक है, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है. मिलिट्री है जो बहुत पावरफुल है तो ओवरनाइट कर लेंगे, नहीं तो स्मॉल ग्रुप्स बिफोर दे विल हैव टू कम टू होल्ड पावर. और वो वायलेंस के थ्रू भी कई बार सबवर्ट करते हैं, है ना. दे नीड पावर, तो पावर अब चाहे पॉलिटिकल हो या मिलिट्री पावर के थ्रू वो सबवर्ट करेंगे. ठीक है, दीज आर द स्मॉल ग्रुप्स हु जनरली सबवर्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. Or people, if common people say this constitution is unjust, we don't consider it subverting of the constitution per se. Constitution should reflect the will of the people. तो अगर लोग ही खुश नहीं है तो हम तो लोगों की ही sovereignty में believe करते हैं, लोगों का ही empowerment होना चाहिए. So that is the idea. Fine. So I hope you understand, Ayush, that this is what we mean, that it is generally not subverted by the masses. है ना, मासेस अगर डिमांड कर रहे हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट जनरली स्मॉल ग्रुप्स करते हैं, जैसे मिलिट्री, जैसे द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ ही बिकेम ऑल पावरफुल इन केस ऑफ श्रीलंका, है ना, तो वैसा. And how do these small groups subvert it? I have explained it through military coup, changing the nature of the government, which results in concentration of power in one person on in a certain group. Yes, so that is the idea. Fine, so we need to ensure such an institutional design where there is no concentration of power in one individual or in one organ. There is separation of power and these organs exercise check and balances over one another ताकि कोई भी organ autocratic ना बन जाए. Fine, so that was the idea. Fine. Coming back to our topic. So this is what we mean by preamble. Let's write down what is preamble. Write down. Preamble refers to introduction or preface of the constitution. Write down, full stop. It is summary or essence of the constitution. Write down, next point, in context of the constitution, in context of a constitution, it is an introductory section. It is an introductory section.
that states the fundamental principles, that states the fundamental principles and values, that states the fundamental principles and values on which the Constitution is built. Yes. Write down next point. Indian preamble is based on the objective resolution, drafted and moved by Jawaharlal Nehru, drafted and moved by Jawaharlal Nehru, and adopted by the Constituent Assembly. Yes, so you find that the preamble is based on the objective resolution. Next point, it is modeled on the UN Charter. UN Charter, ठीक है, UN Charter मतलब UN का Constitution, which in turn is modeled on the US Constitution. Yes, fine. Fine. So this is with respect to preamble to the Indian Constitution का एक introduction है. What do we mean by preamble? And this is based on the objective resolution drafted by Jawaharlal Nehru, and it is modeled on the UN Charter. On the UN Charter मतलब on the preamble which is mentioned under the UN Charter, which in turn is inspired by that mentioned under the US Constitution. US Constitution was the first written constitution in the world, and this constitution had a preamble. Yes, so now on that basis, generally most written constitutions have a preamble. Fine. So that is the idea with respect to the introduction to the preamble to the Indian Constitution. Now, what is the preamble? The preamble of India is also considered the most finely worded preamble in the world. Yes, and it is so finely worded that it has been very much appreciated by prominent scholars, political scholars in the world. Yes, so you find that there is a very prominent political scholar known as Sir Ernest, है ना. तो उन्होंने अपनी किताब, एक बहुत पॉपुलर बुक लिखी थी, उसके इंट्रोडक्शन में इनफैक्ट he had mentioned India's constitution. He was so enamored by the Indian constitution, Indian constitution's preamble, that he mentioned the preamble as an introduction to his popular book. Fine. So now what does the Constitution of India read? The preamble to the Constitution of India read. It reads, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the
nation. Yes, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves uh, the ourselves this Constitution. Yes, fine. So you find this is what the preamble to the Indian Constitution reads. Fine. Now, what is the purpose that this preamble serves? What is the purpose? What is the purpose served by the Indian preamble? Yes. First, if you look at this preamble, it says, "We, the people of India." So it tells you that it is us, the people of India, we have solemnly resolved to create such a nation which is sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to give Indian citizens all this: justice, liberty, equality, fraternity. And this constitution was adopted on such a day. So by in having the word "we the people of India," it is telling the source of authority. Source of authority of the Constitution. What is the source of authority of the Constitution? It is the people. It is people of India. Yes, people of India who have actually written this Constitution. Yes, so this is what the preamble says. It tells us the source of authority, that the source of authority is in fact in the people of India. Yes, because the people have written, and therefore this Constitution is legitimate. Authority मतलब वही है, legitimacy की बात हो रही है ना, कि आप इसको रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं, है ना, आप इसको मानोगे कि नहीं. तो लेजिटिमेसी का सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया हु हैव देमसेल्व्स रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दे से. नाउ हैज द पीपल ऑफ इंडिया रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई इट इज सेड वी द पीपल ऑफ इंडिया? यस, because members of Constituent Assembly who were considered representatives of people of India. Therefore, fine. Now, having solemnly resolved to constitute India into such a nation, so it is also telling us nature of Indian state. What is going to be the nature of Indian state? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. In fact, sovereign democratic republic was what the original constitution mentioned. Socialist and secular were added through the 42nd Constitutional Amendment Act. Fine. To secure to its citizens these values. So it is also telling us the objective of the Indian Constitution. What is the objective of Indian Constitution? To secure to its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to develop amongst them a feeling of fraternity, to assure dignity of individual and unity and integrity of India. So in fact, this word unity was also added, है ना? Integrity was also added through the 42nd Constitutional Amendment Act. Yes, and next, what does it tell us? The date on which, the date of adoption of the Constitution. What else? The Indian Supreme Court has said that it is also a key to unravel the minds of the constitution makers. What does this mean? It is a key to unravel. To unravel का मतलब क्या है? Understand. Understand the minds of the constitution makers. So in case there is an unclear constitutional provision whose meaning we are unable to understand, its meaning is disputed, in such a case
the people can read into the preamble, look into the preamble and understand what kind of Indian state they wanted to establish. Having understood that, they will be able to understand or decipher the meaning of the provision. So in the light of the preamble, any unambiguous, yeah, any ambiguous provision, unclear provision of the constitution can be clearly interpreted and defined. Fine. So this is the idea, this is the purpose that the Constitution of India or the preamble to the Constitution of India serves. Let's write it down. The purpose served by the preamble the purpose served by the preamble. Point number 1, it tells the source of authority. It tells the source of authority of the Indian Constitution. Write down, it is the people of India who have adopted, enacted and given to themselves this constitution. It highlights popular sovereignty. Underline popular sovereignty. What do you mean by popular sovereignty? People are sovereign. People have the supreme authority. Sovereignty matlab supreme authority. So popular matlab people. People have supreme authority. Yes, popular sovereignty, underline. And you can, yes, write down, popular means people, sovereignty means supreme authority. Popular refers to people and sovereignty refers to supreme authority. Full stop. That is people in India are sovereign. है ना? People in India are sovereign or they have supreme authority. Yes. Write down, this imparts या gives, है ना? This imparts legitimacy. To the constitution. Fine. Now this idea that constitution has been written and adopted by the people, yes, has been challenged. There was a case known as Kehar Singh versus Union of India case in 1989. ठीक है, एक केस था केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उसमें जो ये इंसान था केहर सिंह, इसने चैलेंज किया ये आइडिया कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव एक्चुअली रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. है ना? हम क्यों मानते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया हैव रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन? बट इट इज बिकॉज द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन हु वर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, है ना. लेकिन क्या है आइडिया, कल मैं आपको बता रही थी, see, this constituent assembly comprised members who were indirectly elected. Yes, so they were not directly elected but indirectly elected by members of provincial legislative assembly, who themselves, these members themselves were elected on the basis of limited franchise. Yes, so this idea that constituent assembly is representative of the people, yeah, the constituent assembly completely represented the Indian masses, and thereby that the Indian constitution has been written by the people has been challenged in the Supreme Court in this case. Yes, the person Kehar Singh said that the constituent assembly comprised members who were indirectly elected, कुछ तो indirectly elected थे और कुछ nominated भी थे. Yes, in case of princely states. Yes, so these members were indirectly elected and nominated, and those indirectly elected were elected by members of provincial legislative assembly, who themselves were elected on limited franchise. So how can we consider the constituent assembly to actually be representative of people of India? And in this case, the Supreme Court gave a judgment saying that yes, what you are saying is correct. This idea that we, the people of India, have written, adopted, given ourselves this constitution is a legal fiction. Yes, it is a legal fiction, but it is a conclusive assumption. ये सही बोल रहे हो आप कि वो जो बोल रहे हैं केहर सिंह वो सही बोल रहे हैं कि maybe it was not completely representative in the sense that they were indirectly elected and elected by the members who themselves were elected on the basis of limited franchise. But this idea, therefore, is this idea that we the people of India is a legal fiction. लेकिन ये क्या है, conclusive fiction है, ये conclusive assumption है. क्यों? We cannot question this assumption. If you question this assumption, then the legitimacy of Indian constitution would be endangered. Yes, so we cannot actually question the legitimacy. We cannot question this idea that actually we the people of India have written this constitution. Yes, because ultimately in India we believe that we exercise popular sovereignty, we believe in popular sovereignty. Ki people are the ultimate supreme. They have the ultimate authority. Yes, fine. Any doubts? Yes, let's write it down. Yes. What? Legitimacy protect what legitimacy? No institution is protecting the constitutional setup, है ना? What he is asking in terms of legislature, executive, judiciary. Are you asking in this context? What are you asking? Yes. But see, fine, this was fine. So fine, the Constituent Assembly was based on a design, है ना, which was given by the Cabinet Mission Plan. Yes, and the members were also elected on the basis of the design put forward by the Cabinet Mission Plan. Now he is saying कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अब तो independent हो गए हम. Yes, so why cannot we enact a new constitution जिसमें the Constituent Assembly members are actually directly elected by the people of India? There is no need.
What is the need for it, you tell me? We have a very good constitution, है ना? आज के दिन अगर आप इलेक्ट करके लाओगे रिप्रेजेंटेटिव्स, वी डाउट इफ विल गेट सच अ साउंड कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्रोग्रेसिव है ना? इट इज अ वेरी स्टडीड, वेल स्टडीड कॉन्स्टिट्यूशन. देर आर ऑफ कोर्स देर विल बी सर्टेन लैक्यूनेज, जैसे कि ये बहुत लेंदी है ना? बहुत लीगली कॉम्प्लेक्स भाषा लिखी हुई है इसमें, है ना? ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा है. The advantages are more. It is based on very forward looking idea. We have adopted principles of secularism, republic, democracy. The constitutional provisions have been able to sustain the test of the time. Yes, so you find that our constitution, that is what we keep emphasizing every time, that we were very lucky to have the constitution makers we had, the constituent assembly that we had, the leaders engaged in what is known as public reason, the principle of deliberation. Today, do you see the parliament deliberating? Where, है ना? तो it would be a futile exercise. We had one of the most visionary minds of the time, and they were open. They were open to ideological differences. They were open to viewpoint contradiction. Nobody considered themselves that I am so supreme that my views are the only correct views. You could directly question on face, है ना? Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, B.R. Ambedkar, they did not see eye to eye, but they gave utmost respect to one another, utmost respect to your rivals. In fact, they respected, and their opinion was sought after. It was, though, see, there would have been need to bring about such a change. सिर्फ प्रोसीजरल ग्राउंड पे चेंज करने की क्या जरूरत है? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत होती, वी वुड हैव चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. नॉट फॉरवर्ड लुकिंग, वी वुड हैव चेंज्ड. In fact, the debates that they have been memorialized, and they have been documented. All such debates were open to the public, to the media. Do we have freedom of press, freedom of speech and expression in India the kind we had then? No. The press was much more free, yes, compared to what it is today. Yes, so you find that what we have is a very good thing. There is no need, and needlessly spending money of Indian taxpayers on enacting a constitution which is already very good. No problem. In fact, this is one of most successful constitution in the world, very much appreciated across the world. हमने उस समय एक वेलफेयर स्टेट का प्रोविजन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए. Yes, so you find our constitution is a very good document. There is not much problem with it. So needlessly repeating the exercise just for procedural ground would not be would not be fair. Parochial interest से किसी ने डिबेट नहीं किया, सबने एक लार्जर फ्रेम ऑफ माइंड से डिबेट किया. ब्लडी पार्टीशन हो रहा था उस समय, है ना? इट वाज, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड इन द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन, बट यू फाइंड दैट फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज वर ब्रॉट इन. वी डिड नॉट गो फॉर नैरो पैरोकियल व्यूज ऑन थिंग्स, है ना? तो ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है. देयर इज नो नीड टू चेंज इट. सो दैट इज what the Supreme Court is also saying. The constitution is good enough. Now why do you want to question the legitimacy and change the constitution? फिर प्रॉब्लम आएगी, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? फिर अलग अलग प्रॉब्लम आएगी. और ये सारे इश्यूज पे इन्होंने हर इशू पे डिबेट किया है. फाइन, सो दैट इज द आइडिया. सो नो नीड टू डू दैट. सुप्रीम अथॉरिटी. फाइन. Let's write it down. Write down. Next point. However, this idea was challenged. That the people of India have written this constitution in coercing
in Kehar Singh versus Union of India case 1989. Was challenged in Kehar Singh versus Union of India case 1989. Full stop. Next point, write down. The Supreme Court was of the opinion the Supreme Court was of the opinion that this idea या notion is a legal fiction and a conclusive assumption that cannot be questioned because doing so would endanger the legitimacy of the Constitution. Endanger the legitimacy of the Constitution. Next purpose is, yes, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना. बिकॉज इट इज सी डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इज क्या है ना. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया वॉज अ कॉलोनी फॉर 200 years, तो जब इंडिपेंडेंस मिला सबसे बड़ा कोर वैल्यू क्या है? लिबर्टी का मतलब हर पर्सन को राइट होना चाहिए टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट. सो वी अडॉप्टेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इट इज अबाउट पीपल, है ना. ये सब कुछ जो गवर्नमेंट है वो हम ही क्रिएट करेंगे, है ना. हम ही चूज करेंगे, हम ही क्रिएट करेंगे. तो जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस है उसको किसको क्रिएट करना है? हम ही को. तो हम ही ने ये प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. नो, yes, it is an assumption कि actually our representatives have written this constitution. We, all of us, and at the time of independence, I think so, India's population stood at 200 million or something. तो वो सारे 200 मिलियन लोग तो जाके है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते थे. तो ऑफकोर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिखा. तो वही है कि ये कह रहे कि इन्होंने, केहर सिंह ने क्या कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो इनफ रिप्रेजेंटेटिव शायद नहीं था. तो उन्होंने कहा कि हाँ शायद इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी था, क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे और दे वर इलेक्टेड बाय दोज हु वर देमसेल्व्स इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज. तो आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, बट ये एक फिक्शन है जिसको हम मान के चलते हैं, क्योंकि दिस फिक्शन टेल्स द आइडिया इज कि हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना. आप किसका रूल मानोगे? कोई और. हम यहाँ मोनार्की सिस्टम में नहीं है, हम डिक्टेटोरियल सिस्टम में नहीं है. वी द पीपल आर सॉवरेन. हमारे पास राइट होना चाहिए, हम अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे. वी आर गोइंग टू लिव लाइफ ऑन आवर ओन टर्म्स. सो हु विल सेट द टर्म्स? वी. सो वी हैव रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. दैट इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी. अब वो
चाहे हमने गंदा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता तो भी द सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी इज कि हमने लिखा है ना, कुछ तो दिक्कतें हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमने लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन, दैट इज द आइडिया. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड विथ इट? सिंपल सी बात है ना. सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, सोर्स, उसका सोर्स ऑफ है ना रेस्पेक्ट, कि आप उसको क्यों रेस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है, तो वही चीज है. फाइन. फाइन. नेक्स्ट इज, the next purpose is nature. It indicates the nature of Indian state as sovereign, as a sovereign, comma, socialist, secular, democratic republic. Democratic republic. Yes. Fine. So this is with respect to the nature of the Indian state. Next, third point, it highlights the aspiration, of the Indian Constitution, to establish a society, Indian Constitution to establish a society based on justice, liberty, equality, and fraternity. Yes. Fine. Fourth point. It tells us the date of adoption of the Constitution. Date of adoption of the Constitution, that is 26th November 1949. Fine. Fifth point. It is a key. To understand the minds of the constitution makers. To understand the minds of the constitution makers. Full stop. Same point, write down. In case the constitutional provision and its interpretation is unclear. Constitutional provision and its interpretation is unclear, comma, in that case preamble can guide one to the right interpretation of the provision.
Yes. Fine. So these are the purpose, yes, significance, utility of the preamble to the Indian Constitution. The next question is, write down next subhead, is a preamble part of the Indian Constitution? Is a preamble part of the Indian Constitution? Yes. As I told you, the preamble was written after the Constitution. So the entire Constitution was written, after that the preamble was written. So question arose once again in the minds of the people, and a case was taken to the Supreme Court. Is preamble part of the Constitution? So initially Supreme Court said no, the Constitution is not part of the Constitution. And later on the Supreme Court changed its mind. है ना? Supreme Court can revise its judgment. So it changed its mind, and in Keshwananda Bharti case, it is a very, very popular case that we will keep referring throughout our discussion as part of pre-foundation as well. So I am mentioning it here. In Keshwananda Bharti case of 1973, Supreme Court changed its mind and said that yes, preamble is part of the Constitution. So it is part of the Constitution, but it is not legally enforceable. मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स है, fundamental rights which are mentioned in the Constitution, once the Constitution was adopted and it entered into force, all of us automatically got fundamental right. In case our fundamental right gets violated, we have a right to go to the Supreme Court, the High Court, and get our fundamental rights enforced, क्योंकि वो enforceable part है. जो इलेक्शन के प्रोविजंस है वो enforceable है. अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो एनफोर्सिएबल है. हाउएवर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये एनफोर्सिएबल नहीं है पर से, है ना. ये एक आइडिया मेंशन कर रहा है ना. इट इज टेलिंग अस ओके, दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड दिस इज द आइडिया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द आइडियल दैट वी वांट टू एस्टैब्लिश. तो ये अपने आप में एनफोर्सिएबल नहीं है. ठीक है, ये एक समरी है. समरी कैसे एनफोर्सिएबल होगी? फाइन. सो दैट इज द आइडिया. Write down. So you have written, is preamble part of the Indian Constitution? Write down yes. Yes. Write down full stop. In Keshwananda Bharti case, in Keshwananda Bharti case in 1973, Supreme Court overturned its previous judgment and expressed the opinion that the preamble is in fact expressed the opinion that the preamble is in fact part of the Indian Constitution. Yes. Next point, इसी में लिखो, but the preamble is not enforceable. But the preamble is not enforceable.
enforceable, not enforceable, underline. Full stop. It is not a source. It is not a source of any right or restrictions. Fine. So this is with respect to the idea of preamble, the introduction of preamble, importance of preamble. Is preamble part of the Indian Constitution? Is it enforceable? We have discussed. Now we'll discuss these key words which are mentioned in the preamble, and the meaning of each of these key words. What do we mean by sovereign? What do we mean by socialist, secular, democratic, republic? Write down, give the heading, keywords and their meaning. Meanings. Yes. The first keyword is sovereign. So what do you mean by sovereign? It means supreme authority. It means supreme authority. See, we define sovereignty as, or we say that the Indian state is sovereign. So it means that India as a country is supreme internally. मतलब इंटरनल डिसीजन मेकिंग, इंडिया को कोई डिसीजन लेना है, फार्मर्स लॉ लाना है ना, कुछ और डिसीजन लेना है, एमजी नरेगा स्कीम लेकर आनी है या एमजी नरेगा स्कीम वाइप आउट करनी है, व्हाटएवर, द गवर्नमेंट और द इंडियन स्टेट इज इंटरनली सुप्रीम. वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं. यस. एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट. मतलब फॉरेन पॉलिसी में है ना, फॉरेन अफेयर्स में हम फ्रीली अपना डिसीजन ले सकते हैं. दैट इज हाउ वी डिफाइन सोवरेनिटी. यस. हाउ वी डिफाइन, इफ somebody is sovereign, we say they are internally supreme and externally independent. So in external affairs, yes, India is free to decide. अभी जैसे 2 साल से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर में हमें किसका साइड चुनना है, वो हमारा सॉवरेन राइट है. वी आर फ्री टू टेक एनी साइड. इजराइल हमास वॉर चल रहा है, सो वी आर फ्री, है ना. हमें यूके के साथ रिलेशन करना है या जापान के साथ या चाइना के साथ या यूएस के साथ, ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट डिसीजंस है. नोबडी कैन प्रेशराइज इंडिया टू टेक अ डिसीजन, है ना, ईदर इन सपोर्ट और ईदर अगेंस्ट. यस. You would have seen in case of, say, for example, Russia Ukraine war, हम पे प्रेशर था टू टेक डिसीजन, और है ना, इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन, लेकिन हमने न्यूट्रल पोजीशन चुना, तो जो हमारा डिसीजन है हम कुछ भी करें. सो इन एक्सटर्नल अफेयर्स वी आर इंडिपेंडेंट, एंड इन इंटरनल अफेयर्स वी आर सुप्रीम अथॉरिटी है. फाइन. सो दैट इज द आइडिया इन टर्म्स ऑफ सोवरेनिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोवरेनिटी, there arises a question that if India is part of international organizations जैसे कि UN, है ना, तो does it impact our sovereignty? उससे क्या sovereignty कम होती है? नहीं. In fact, that was an independent choice that we have made to be part of that organization. Yes. So it does not interfere with Indian sovereignty under any circumstance. So India can choose to be part of such organization, choose not to be part of such organization. It is our sovereign choice and it does not impact India's sovereignty. The fact that India as a country is internally supreme and externally independent. Fine? Fine, let's write it down. Write down. First word you have written, sovereign.
it indicates supreme authority. Yes, write down. It indicates, in points we are writing, it indicates, it denotes supreme power to take decisions internally, that is within the country. And externally independent. That is India is free to take any decision, comma, make any choice in foreign affairs. Next point इसी में लिखो. India is part of various international organizations however it does not compromise India's sovereignty. Yes, it is through voluntary choice. That India has chosen to be part of such international organizations. And constitutes no limitation on India's sovereignty. Yes, on India's sovereignty. Fine. So this is the idea that yes, what we mean, we are supreme authority, internally supreme, externally independent. इतना ही इसका मतलब है. Yes. Divyanshi says, ma'am, how preamble is not enforceable? Can you please explain? Not enforceable मतलब it is not a source of any right. है ना? ये एक summary है, लेकिन ये अपने आप में कोई rights आपको नहीं दे रहा. Yes, ये आप पे कोई restrictions नहीं लगा रहा अपने आप से. Fine. So what is the source of rights and as well as restriction is the constitution and not the preamble. ठीक है, तो that is the idea कि it is not enforceable. ये अपने आप में कोई source, legal source of rights नहीं है. As simple as that. Yes, fine. The next word is socialist. Write down.
What do you mean by socialist? What do we mean by this word socialist? ठीक है, और बताओ. इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर से सोशलिज्म का फीचर नहीं है ना. हाँ, डीपीएसपी है ना. डीपीएस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक प्रोविजन है ना, राइट टू वर्क, कि एवरीवन शुड हैव राइट टू वर्क, दोज हु वांट टू वर्क शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क. तो हाँ ठीक है, ये एक फीचर हम मानते हैं इस आइडिया का. सी सोशलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, this idea that India is a socialist democratic republic, this idea that we are a socialist country was not included in the original preamble to the Indian Constitution. It was added through the 42nd Constitutional Amendment Act. Yes. And the socialism that India talks about, socialism आप किस context में समझते हो? In the world of ideologies. Ideologies मतलब क्या होता है? स्कूल्स ऑफ थॉट. हाँ, विचारधारा है ना. इसका मतलब होता है विचारधारा या स्कूल्स ऑफ थॉट. तो उसमें दो प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है. एक है लिबरलिज्म, एक है सोशलिज्म. हाँ, और यहीं पे आई एम मेंशनिंग कम्युनिज्म. ये एक दूसरे के कुछ वेरिएंट है ना, स्टेजेस हैं. अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम दोनों को ओवरलैपिंगली यूज करेंगे. ठीक है, दो विचारधारा है, एक लिबरलिज्म है, एक सोशलिज्म है. नाउ लिबरलिज्म, इनके हिसाब से द प्राइमरी वैल्यू, सब वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, एवरी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, बट द प्राइम मोस्ट वैल्यू इज लिबर्टी. फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव द प्राइम मोस्ट वैल्यू इज इक्वालिटी. ठीक है. ये जो ओरिजिनल आइडिया है ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म was given by this person known as Karl Marx. Fine. Now the Indian, जब हम कह रहे हैं कि we are a socialist country, socialism जिस भी फॉर्म में आया वो फॉर एग्जाम्पल आया इन सोवियत यूनियन, इन चाइना. दे आर, है ना, कम्युनिस्ट पार्टीज वहां पे पावर में आई और उन्होंने दे ट्राई टू ब्रिंग अबाउट in whatever form it was possible the ideas of Karl Marx. लेकिन हम जब अपने आप को सोशलिस्ट बोलते हैं, हम इस तरह के सोशलिज्म में बिलीव नहीं करते. जो मार्क्सियन आइडिया ऑफ सोशलिज्म है, हम उसमें प्योरली बिलीव नहीं करते. हमारा जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म है, जिसमें इंडिया बिलीव करता है, सोशलिज्म देखो हर स्कूल में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, है ना. सो इवन अंडर सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आई हैव गिवन यू टू एग्जांपल, सोवियत यूनियन एंड चाइना. चाइना ऑल्सो डिड नॉट इम्प्लीमेंट द प्योर आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स. उन्होंने माओइस्ट, जो उनका लीडर था माओ जेडोंग, है ना, तो उनका आइडिया इम्प्लीमेंट किया जिसको कहा जाता है माओइज्म. तो अब इंडिया ने कैसा सोशलिज्म में बिलीव करते हैं? हम बिलीव करते हैं इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. हम, है ना, हम प्योर मार्क्सिस्ट आइडिया में नहीं बिलीव करते. हम किस में बिलीव करते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. ये है ना. तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस, हाँ, पीएसयूज, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. मतलब गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना, गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो हमारे यहाँ इन दोनों के को एग्जिस्टेंस पे हम फोकस करते हैं, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है. एंड दिस इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. एज फार एज कम्युनिज्म या socialism of Karl Marx is concerned, he believed in complete state ownership of resources.
कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन हम कंप्लीट स्टेट ओनरशिप पे नहीं बिलीव करते, अ मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड स्टेट ओनरशिप. फाइन. सो दिस इज आवर आइडिया ऑफ सोशलिज्म. और हमारा सोशलिज्म इज वेरी मच टिल्टेड टूवर्ड्स द गांधीयन आइडिया. जो गांधी जी का आइडिया था, है ना, उसमें हम ज्यादा बिलीव करते हैं. गांधी जी का आइडिया था अंत्योदया, welfare of the poorest and the most vulnerable section. Yes, so it is not, है ना, socialism talked about equality of all, लेकिन हम यहाँ पे हम बेसिकली वेलफेयर की बात करते हैं. वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट, वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल, स्टेट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लार्ज इनइक्वालिटी ना हो. ये है हमारा आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. Fine. So is India a socialist country? Yes or no? देखो, we are not, clarify, अगर कोई आपसे ये पूछता है तो clarify that we are not a believer, या we do not follow the Marxist idea of socialism or communism. Rather, we believe in what is known as market socialism, whereby we believe in coexistence of both state and private ownership of resources. Yes, so and हमारा जो idea of socialism है, it is tilted towards the Gandhian idea. और हम ये कहते हैं कि with LPG era reform, है ना, हाँ, तो ये 1990s में हुआ, 1991 के अराउंड ये हुआ LPG era. हमने प्राइवेट ओनरशिप को ज्यादा एम्फेसिस किया इसके बाद. यस, प्राइवेटाइजेशन क्या है? LPG मतलब लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस राज खत्म हो गया, है ना. पहले कोई भी अगर किसी को इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना था, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होता था. अब ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेंसिटिव इंडस्ट्री. बाकी अगर आपको कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो विदाउट परमिशन पर से. प्राइवेटाइजेशन, ग्रेटर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ग्रेटर प्राइवेट इनिशिएटिव एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल फ्री ट्रेड में पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो ये जो आइडिया है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सोशलिस्ट कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है. कैसे कम हुआ है? क्योंकि आप देखते हो PSUs, आज के दिन गवर्नमेंट क्या कर रही है PSUs को लेके? डिस इन्वेस्टमेंट एंड दे आर एट टाइम्स गेटिंग क्लोज्ड आल्सो, शट डाउन, या तो इसको पूरा प्राइवेट ओनरशिप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. फाइन. सो यू फाइंड सिंस LPG एरा रिफॉर्म, है ना, this variety of socialism या socialistic tendencies in India is on relative decline. Fine. Everybody is clear? We can write it down now. Write down. Write down the term was added through 42nd Constitutional Amendment Act. (42nd Constitutional Amendment Act). Write down next point. Unlike Marxist variant of, unlike the Marxist variant of socialism and communism, comma, India follows democratic socialism. Yes, write down. Next point, communist socialism is about abolition of abolition, ABOLITION, abolition of private property,
and state ownership of resources, and state ownership of resources. State ownership of resources, full stop. On the other hand, India's democratic socialism is expressed through mixed economy, in bracket coexistence of public and private enterprises, full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, the primary aim of Indian socialism is to eliminate inequality of economic resources, and improve resources and improve standard of living. Standard of living है ना? You understand standard of living? Write down. Next point, Indian variant leans towards Gandhian ideas. So Indian socialism leans towards Gandhian ideas. Our last point, since LPG era reforms, India's socialist credentials since LPG era reforms, India's socialist credentials have been relatively diluted. India's socialist credentials have been relatively diluted. Full stop. Fine. So this is with respect to socialism. Achha, there's a question by Ayush. Ayush says, ma'am, in context of India, what is more supreme, its people or constitution? Yes. इंडिया में कौन सुप्रीम ज्यादा है वो पूछ रहा है, पीपल या कॉन्स्टिट्यूशन? इन इंडिया वी बिलीव इन पॉपुलर सोवरेनिटी. यस, Constitution is sovereign, yeah. Constitution is the fundamental framework of governance and it enjoys supremacy because it has been written by the people. ठीक है, तो इंडिया में क्या है? इंडिया practices popular sovereignty. India believes in popular sovereignty
और कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों सॉवरेन माना गया है या क्यों सुप्रीम माना गया है? क्योंकि इट हैज बीन रिटन बाय द पीपल, तो इसीलिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे which is sovereign, which is supreme, so say that India as a democracy, India as a liberal democracy believes in popular sovereignty, and the constitution enjoys authority in India because it has been written, enacted, adopted by the people of India. ठीक है, तो that is the idea. Fine, I hope it is clear. Next idea is secular. यस अब सेक्युलर का क्या मतलब है? यस, वी डू नॉट बिलीव इन रिलीजन। इंडिया रिलीजन में बिलीव नहीं करता है? The state in India does not follow any religion या does not align itself with any religion, है ना? Indians we believe in religion, है ना? हम कोई थोड़ी ना कम्युनिस्ट कंट्रीज वो नहीं बिलीव करते भगवान में, ठीक है? कम्युनिज्म डज नॉट बिलीव इन रिलीजन। तो चाइना में दे डू नॉट बिलीव इन रिलीजन पर से, सोवियत यूनियन में भी ऑल्सो दे डिड नॉट बिलीव इन रिलीजन। वाई? कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज नथिंग बट ओपियम ऑफ द मासेस। ओपियम समझते हो, ड्रग। तो इट डज नॉट अलाउ यू टू रियलाइज कि क्या है सच्चाई, क्या है वो आपको पता नहीं चलता। क्योंकि रिलीजन क्या कहता है कि जो आप अभी जिस तरह का अभी आपका जीवन है, वॉट एवर काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, इट इज बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मास, एंड दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, दिस इज अ माया। द रियल वर्ल्ड लाइज समवेयर एल्स। तो वॉट एवर द रिलीजन सेड, if you have got good king because you have done good deeds in the past, if you have got an evil king, evil ruler, because you have done wrong in the past, so this is the justice being given to you by God. ठीक है, तो वो कहते थे कि रिलीजन आपको क्या है, सच्चाई क्या है, रियलिटी विटनेस या रियलिटी को अंडरस्टैंड करने का मौका नहीं देती। इस वजह से रिलीजन के अगेंस्ट थे कार्ल मार्क्स। फाइन, बट एज इंडियंस वी बिलीव इन रिलीजन, है ना? वी हैव वैरायटी ऑफ रिलीजन्स। यस, वी आर सो कॉल्ड अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री. We have Muslims, the minority population of Muslims, in fact, constitute the second largest Muslim population in the world. After Indonesia, the second largest number of Muslims live in India. Their population is comparable to the Muslims in Pakistan. Yes, then we have a diverse population in, we have Christians, we have Jews who are also living amongst us. So you find that a variety of religion, है ना, Parsis, है ना, बहुत variety of religion हम coexist करते हैं यहाँ पे in India. Now in such a circumstance, Indian state, the constitution makers decided that India will be a secular country. That means the state will not align itself with any particular religion. Unlike, say, the state of Pakistan that got created, which identified Islam as its state religion. Yes, so this is the idea of secularism. लेकिन जो secularism का simple meaning यही है कि state not identifying itself with any religion. लेकिन जो idea है secularism का, it is a wide concept. वो एक political concept है ना? Politics के context में, state के context में आ रहा है वो concept. तो जो भी state के context में concept आता है, वो political concept होता है. और जो political concept होता है, वो contested होता है. Because politics is about contest. So यहाँ पे कोई भी idea ऐसा नहीं है जिसपे complete consensus है. There is a lot of diversity of views. So पहले कुछ जो पहले के है ना, initially the countries who adopted secularism were the European countries. They became independent earlier,
and many European countries adopted the policy of secularism. Now their idea of secularism is different from Indian idea of secularism. Their idea of secularism is about a strict wall which separates religion from public sphere. Religion and state के बीच में एक strict wall है. There is no relation between religion and state. Yes, it is believed that state जो है वो public sphere का चीज है, जहाँ public sphere मतलब जहाँ पे लोग कॉमन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, दे शेयर देयर ओपिनियंस, व्यूज, डिस्कस अबाउट द स्टेट पॉलिसीज, है ना. तो स्टेट इज इन पब्लिक स्फेयर, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ प्राइवेट स्फेयर, कि हम अपने प्राइवेट घरों में जो करें दैट शुड नॉट बी डिस्कस्ड इन पब्लिक. सो देयर इज अ स्ट्रिक्ट वॉल. द यूरोपियन स्टेट इज इनडिफरेंट टू रिलीजन. उनका आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? स्टेट इज इनडिफरेंट. लेकिन इंडिया एज अ कंट्री इज डिफरेंट. इंडिया में लोगों का रिलीजन से बहुत ज्यादा क्लोज है ना रिलेशन है. वी बिलीव इन गॉड, है ना, एंड वी लाइक टू एक्सप्रेस आवर रिलीजियस व्यूज इन पब्लिक. हम बहुत, है ना, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. वी हैव रिलीजियस प्लेसेस वेर वी go out to worship, है ना. Religion is very intrinsic part of an Indian person's life. Yes. Also there is a variety of religions. So the Indian constitution makers, and acha, also one other point was the the religions that we practice often have certain ill practices, है ना. जैसे इन हिंदुइज्म में था सुपरस्टिशन, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, है ना. तो इस तरह से हर रिलीजन में कुछ इश्यूज हैं, उनको कई बार कुछ रिफॉर्म की भी जरूरत होगी. तो फाइन. सो इंडियन कंटेक्स्ट वाज वेरी डिफरेंट. पीपल आर वेरी इंट्रिंसिकली लिंक्ड. रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. Unlike European countries where there is generally dominance of one religion, India is a multicultural, multi-religious nation. People belonging and practicing different religions live in India, and you find certain religious practices also needed a reform. Yes, so it is in this context Indian constitution makers could not blindly replicate the European idea of secularism in India. तो हमने क्या कहा, उनका सेक्युलरिज्म क्या है? स्टेट इज इनडिफरेंट टू रिलीजन एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट वॉल सेपरेटिंग स्टेट एंड रिलीजन. रिलीजन इज अ मैटर ऑफ प्राइवेट अफेयर. बट इन केस ऑफ इंडिया वी सेड दैट स्टेट इज नॉट गोइंग टू बी इनडिफरेंट टू रिलीजन. रादर स्टेट विल अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन. स्टेट ने कोई ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन स्टेट का रिलेशन क्या रहेगा? इट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली डिटैच्ड, रादर अ पॉलिसी ऑफ इक्वल डिस्टेंस. और इसको एक दूसरे स्कॉलर है, उन्होंने इंडिया सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया है, इंडियन स्टेट अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. फाइन. सो दैट इज द आइडिया ऑफ Indian secularism. Yes, fine. So for pre-foundation we'll just understand this much, but as such secularism is a very very rich concept जहाँ से बहुत सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं. अभी recent times में there was a discussion going on with respect to फ्रांस's idea of secularism, क्योंकि फ्रांस भी कई बार न्यूज में आता रहता है, they have banned, है ना, बुर्का, veils in public sphere. They have talked about turban banning in public sphere, है ना. तो उस context में what is France's idea of secularism, Indian idea of secularism, Western idea of secularism, Indian idea of secularism करके है ना, काफी एक अच्छा discussion बनता है. Fine. But from our perspective we'll just understand it at this much. Let's write down. Because as I told you it is देखो, जो भी हम पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं
वो हम वैक्यूम में अडॉप्ट नहीं करते. वी आर, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं. नेचुरल साइंस में एटम जैसे बिहेव करेगा वैसे ही बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे बिहेव करेंगे शायद वैसे ही बिहेव करेंगे, है ना. वहां पे फंडामेंटल ट्रुथ्स होते हैं. लेकिन सोसाइटी में वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, हम सब सोशल एनिमल्स हैं. सोशल सर्कमस्टांस के बेसिस पे हमें पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होती है. समथिंग दैट हैज वर्कड इन वेस्ट need not necessarily work for India. Something which is working for India need not necessarily work for Maldives, for Bangladesh, for another country. Yes, so social circumstances अलग है. इस वजह से सेक्युलरिज्म का प्राइमरी आइडिया क्या है? स्टेट और रिलीजन का कोई लिंकेज नहीं है. स्टेट हैज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड अ रिलीजन, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन हमेशा अलग होगा. यस, ऐसा ही एक आइडिया है फेडरलिज्म. वील स्टडी फेडरलिज्म रिलेटिवली इन डिटेल, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वही पढ़ेंगे कि जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ फेडरलिज्म है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम आवर आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. यस, सो दैट इज व्हाट, क्योंकि सोशल सर्कमस्टांसेस अलग हैं तो इन पॉलिसीज का जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो अलग होगा. फाइन, लेट्स राइट इट डाउन. Write down, in a secular state, no state religion has been identified. Write down, the state does not have any official religion. Write down, however, the Indian idea of secularism is different from the Western idea of secularism. Indian idea of secularism is different from Western idea of secularism. लिखो, under Western idea, next point, under Western idea, under Western idea, there is a strict wall separating the state and religion. Write down, they consider state to belong in public sphere. पब्लिक स्फेयर है ना, पब्लिक स्फेयर जहाँ फ्री ओपन डिस्कशन है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं. while religion belongs to the private sphere. While religion belongs to the private sphere. Write down, full stop. The state
the state in European countries, the state in European countries is indifferent to religion, is indifferent to religion. Full stop. Next point, write down. On the other hand, on the other hand, in case of India, there is no strict wall, there is no strict wall separating separating state and religion. Full stop. The Indian state follows the policy of क्या? There is no wall separating state and religion. Full stop. Indian state believes in, आपने क्या लिखा? believes in policy of equidistance or principled distance from religion. Yes. Write down. Next point. While the European concept of secularism is negative, है ना, they want separation, it is negative, comma, Indian concept is positive. Yes, write down. India believes in Sarva Dharma Sambhav. Equal respect to all religion. Sarva Dharma Sambhav, है ना, equal respect. हमारे यहाँ स्टेट इज नॉट इनडिफरेंट. हम रिलीजन को, हमारा कोई नेगेटिव या इनडिफरेंट आउटलुक नहीं है, ठीक है. हम रिलीजन, हमारा क्या है? इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन. दैट इज इंडियन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म. We do not believe in strict separation or drawing a wall between state and religion. Yes, the Indian state is equally respectful of all religion. The Indian state follows the same and a policy of equidistance या principled distance from all religion. Yes, तो हम कहते हैं कि हमारा पॉजिटिव है और उनका नेगेटिव कंसेप्ट है. फाइन. फाइन. सो there are countries like, say, other countries like Pakistan, है ना, which have state religion, है ना. बहुत सारे जो अरब देश है, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनमें भी दे हैव स्टेट रिलीजन. अच्छा, एक दूसरा भी कंसेप्ट है विच इज नोन एज थियोक्रेटिक स्टेट्स. थियोक्रेटिक स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? एक होता है सेक्युलर देश, एक होता है देश, स्टेट्स विच हैव स्टेट रिलीजन, विच हैव आइडेंटिफाइड स्टेट रिलीजन, और एक होता है थियोक्रेटिक स्टेट्स. इनका क्या मतलब होता है? तो
तो फिर पाकिस्तान के बहुत सारे रिलीजन प्रमोट करता है. पाकिस्तान अ थियोक्रेटिक स्टेट. ऑटोक्रेटिक नहीं हो रहा है, थियोक्रेटिक. Yes. Theocratic states are states whereby the head of the state is a religious head. आप किसी religious head को head of the state जब बना देते हो, पाकिस्तान में कोई religious head है क्या head of state? नहीं है ना. वहां का जो president है वही head of state है. President is elected, है ना, indirectly, directly, जैसे भी. So in case of theocratic state, the head of the state is a religious man या religious head. ठीक है. दुनिया में बहुत कम theocratic state है. one such state is Iran. Write down theocratic state. Write down. It is a state or a form of government in which religious heads या religious persons are made head of state. For example, in countries like Iran, Yemen, Sudan, etc. The government is operated under the authority of divine rule or power. Yes. Write down. Since 1979, the supreme leader of Iran is a religious head. ठीक है. बस ये नाम जान लो. थियोक्रेटिक स्टेट्स जहां पे गवर्नमेंट इज अंडर द नेम ऑफ गॉड, डिवाइन रूल. तो इसीलिए जो रिलीजियस हेड है वो होता है हेड ऑफ स्टेट जनरली. ठीक है. सो दैट इज द आइडिया. दे विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. दे कैन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे पीपल है, वहां पे डिवाइन पावर है. लेकिन हाँ, दे विल इस्लामिक प्रैक्टिसेस, शरिया लॉ. अफगानिस्तान इज रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ शरिया लॉ, है ना. तो सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो अ थियोक्रेटिक स्टेट. तो दे डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, है ना. तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा बेसिकली. That is different. That is religion all of us practice. But does that make us non-secular? That is different. Practicing a religion is different. But somebody who's a religious head, है ना, वो believe करते कि यही भगवान के बेसिस पे, हम भगवत गीता के बेसिस पे थोड़ी ना अपना गवर्नमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, या कुरान के बेसिस पे या बाइबल के बेसिस पे अपना गवर्नमेंट नहीं कंडक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो हम
वो चीज है. यू अंडरस्टैंड? क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स. हाँ. वी हैव फंडामेंटल राइट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इट. ठीक है. आर्टिकल 29 एंड 30 है ना, गिव अस सर्टेन राइट्स विथ रेस्पेक्ट टू इट. उसमें है ना फ्रैगमेंटेशन है फंड के बेसिस पे, हु इज फंडिंग दैट स्कूल. तो अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इट इज नॉट, नोबडी कैन फोर्स अस टू प्रैक्टिस अ सर्टेन रिलीजन, है ना. लेकिन अगर कंप्लीटली रिलीजियस बॉडी फंडेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है, तो वहां पे यू हैव अ चॉइस टू गेट एनरोल्ड और नॉट गेट एनरोल्ड. तो है ना, देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, है ना, अंडर आर्टिकल 29 एंड 30. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट. फाइन. द नेक्स्ट आइडिया is democracy. Yes. Yes, India is a democratic, liberal democracy. Yes, यहाँ पे अभी बस डेमोक्रेसी को समझेंगे. What do you mean by democracy? फ्रीडम के बेसिस पे है दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ, बाय एंड फॉर द पीपल. यस, बेसिकली राइट ऑफ द पीपल, है ना, टू चूज their government. It is about empowerment of the masses. Of democracy is of two types. Direct democracy, where people will directly participate in policy making. Example in the present times is Switzerland. And indirect democracy. Indirect democracy, India. है ना, अधिकतर देश इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्रैक्टिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी. फाइन. फाइन. डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स क्या हैं? किसके थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है? पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड देयर आर सर्टेन टूल्स सच एज रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, देन इनिशिएटिव एंड रिकॉल. ठीक है, तो इसका क्या क्या मतलब है? रिकॉल का मतलब आपने जिनको भेजा है ना, टू रिप्रेजेंट यू ऑन सर्टेन इश्यूज, आप उनको, अगर दे डू नॉट परफॉर्म, यू हैव द पावर टू रिकॉल देम. उनका टर्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन यू कैन रिकॉल बैक द रिप्रेजेंटेटिव यू हैव सेंट, है ना, फॉर अ लिमिटेड इशू. फिर उसके बाद इनिशिएटिव. पीपल ऑफ, ऑल ऑफ अस वांट अ लॉ ऑन say the hygiene in ORN. So we can initiate a legislation. We can suggest to the government that you make a legislation on sanitation in ORN. Yes, plebiscite and a referendum are very similar. We talk about plebiscite and referendum. Example of referendum, UK, United Kingdom exiting from EU, है ना. तो ब्रेग्जिट वाला जो आइडिया था, ईयू, यूरोपियन यूनियन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी मेंबर कंट्रीज है, उनमें से एक कंट्री थी यूके, एंड यूके हैज चोजन टू एग्जिट ईयू. दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ ईयू. एंड बिफोर द गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन, अ रेफरेंडम वाज कंडक्टेड. पीपल हैड टू वोट yes or no. You want to be part of EU, you want UK to quit EU. तो yes or no में जवाब दो. और प्लेबिसाइट, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सिक्किम. दिस स्टेट ऑफ सिक्किम, है ना, सिक्किम बिकेम एन फुल फ्लेजेड इंडियन स्टेट इन 1975-76. यस, तो उस कंटेक्स्ट में, बिफोर इट बिकेम अ स्टेट,
अ रेफरेंडम वाज कंडक्टेड विद इन सिक्किम. वहाँ पे एक मोनार्की थी, तो लोगों से पूछा गया कि आप मोनार्क के अंदर ही रहना चाहोगे या वुड यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट. And people expressed their opinion that they want to become part of Indian state. So monarchy was abolished and Sikkim integrated into India. With respect to Kashmir issue भी हम plebiscite कहते हैं. So you find that they are people express opinion. Common people express opinion through referendum or plebiscite. अब इनका difference क्या है? In case of referendum, the option of answer is yes or no. Plebiscite is generally on a broader policy question. And a broader question ki, do you want to be part of this country or not? Do you want to secede from this country? है ना, आप इस कंट्री से बाहर जाना चाहते हो, आप इलेक्टोरल सिस्टम चेंज कर देना चाहते हो जिसके थ्रू इलेक्शंस होते हैं, है ना. तो इस तरह के जो ब्रॉड इश्यूज है उन पे जनरली प्लेबिसाइड होता है, और रेफरेंडम रेगुलर इश्यूज पे, डे टू डे इश्यूज पे रेफरेंडम होगा, और उनका वो सवाल बहुत नैरो होगा जिसका जवाब येस और नो में होगा. अदरवाइज प्लेबिसाइड इज अ काइंड ऑफ रेफरेंडम. फाइन. So this is the idea. Fine. So you have direct democracy and indirect democracy. Indirect democracy दो तरह की होती है. Yes. Indirect democracy दो तरह की होती है. Parliamentary form of government या presidential form of government. ठीक है. Fine. And when we say this word democracy as it has been used under the Indian preamble is not just limited to the idea of political democracy. ठीक है. It is not limited to the idea of political democracy. It also denotes the idea of socio-economic democracy. Yes, so here we can express the view of B.R. Ambedkar, a very famous view, कि जिस दिन हमने अपना constitution adopt किया, the day the constitution entered into force, he said India has entered into a life of contradiction. क्योंकि at that moment political democracy was institutionalized, however socio-economic democracy was still missing. So he said, if we want to sustain political democracy, it is essential that India works towards socio-economic democracy. Fine. So this is the idea with respect to democracy. Right down. Do you want to take a break? Yes, fine. Then let's take a break and then we'll continue. Fine. Let's take a 10 minutes break and then we'll continue. Yes, starting once again. I think so many of you also came, 2-3 of you have come with me with this doubt. What do you mean by that the European concept of secularism is negative and that of India is positive? Negative matlab kya hai? They believe in complete separation. State has zero role with respect to religion. Yes? And positive matlab kya hai? We do not believe in complete separation of state and religion. We believe that the state will not favor any particular religion. Yes? So our state is not indifferent to religion. Our state is equally respectful of all her religion. Sarva dharma sambhav. Yes? So that is the difference. Wahan pe state is indifferent. Yahan pe state is equally respectful for all her religion. Yes, practices the policy of equidistance or principled distance. So that is the idea कि जहाँ पे indifference है तो इसलिए negative है, यहाँ पे equal respect for all religion है इसीलिए positive concept है. Fine. So that is the idea. What is the difference between public sphere and private sphere? Private sphere, the sphere of your family. So your father, mother, your siblings, आपके दादाजी दादी जी, है ना, योर फैमिली, आपका फैमिली में क्या डायनेमिक्स है. हाउ डू you might choose to call your father papa, you might choose to call him dad, you might choose to call him abba, you might choose to call him some other name. Yes, whatever it is. So it is your dynamics, it is your private sphere. Nobody is telling you, oh, he's your father, so he should be called by this name. There is no law, nothing written
oh, she is a mother, so the mother should be called by this name, and this is you should show respect, है ना. हर language has a different way of expression. Generally what happens in local languages, you show, जैसे हिंदी में you will say हमारे यहाँ आप और तुम है, तो आप जनरली फादर को आप बोलते हो और कई बार मम्मी को या मदर को तुम बोलते हो. यस, what is your relation with your siblings? Do you get along with your cousins? So this is our private sphere. Nobody is coming. The state has no role in it. How I choose to raise my child is my choice. What school I want to send him to is my choice. Do I want to send him into CBSE board, IB board, or do I want to homeschool? Nobody is dictating me anything. This is my private sphere. What is my relation with my family is my private sphere. What is your relation is your private sphere. Public sphere क्या है? Public sphere, when we are in a public mode of transport, how we should behave in a metro, how should we behave in a public transport. Traffic signals hai, how should we follow it? Yes. So in public spaces, there is a bus stop. You should not throw your wrappers and things on the roads, on the bus stop. So that is our public sphere, where we are coming in contact with larger people, है ना, beyond our immediate family, जहाँ पे हम generally we meet with the society. So public transport, है ना, ये सारा क्या है ना, how you travel in an airplane. There is certain rules how you behave on an airport. You cannot just go and miss the line. There is a queue that has to be followed. All that is public sphere. What kind of a dressing you do in a public sphere has, there is somebody, the society will say you something. If you are very, very indecently dressed, maybe the state can also say you something. Yes, these are public spheres. Yes, if you are disrespectful of the policeman, public sphere है ना, ये public sphere है जहाँ पे हम common अलग दूसरे लोगों से मिलते हैं, वो public sphere है. Private sphere जो हमारा immediate family का sphere है, that is our private sphere. My relation with my parents, my spouse, my children, my grandparents, है ना, ये हमारा private sphere है. The idea is that taxpayers' money will not be used or will not be spent on a particular religion, on one particular religion. The state should ensure, अगर public tax money है, देखो ये सारे provisions हैं in the Indian Constitution under Article 29 and 30, clear provisions mentioned है कि taxpayers' money कैसे spend कर सकता है government, है ना. तो that is the idea. जैसे for example in case of India, at the time of India's independence, we went for a Hindu civil code. और आज के दिन हम चाह रहे हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए. तो स्टेट इज टेलिंग अस which religious practices we can follow, which we cannot. तो R is a principal distance, equidistance. अब लेकिन पहले हिंदू कोड बिल आया, अब वो कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म कोड बिल लाएंगे. तो वही है कि जो उस समय फीजिबल है वो किया हमने. तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम, है ना, एक रिलीजन की तरफ टिल्टेड है, दूसरे की तरफ नहीं है. दैट इज द आइडिया. यू अंडरस्टैंड? फाइन. आई होप इट इज क्लियर. यस, राइट डाउन डेमोक्रेसी. यू हैव गिवन द हेडिंग एज डेमोक्रेसी. राइट डाउन. In yesterday's class, we have written democracy is government of the people, by the people, for the people, empowerment, accountable. ये सब लिख लिया है आपने. तो अब डायरेक्टली लिखते हैं. Democracies are of two types. Democracies are of two types. Direct democracy and indirect democracy. Write down. Example of direct democracy में लिख लो Switzerland in the present times.
Write down next point. Indirect democracy is of two types. Indirect democracy is of two types. स्विट्जरलैंड ही लिखो अभी एग्जाम्पल में. Indirect democracy is of two types. Parliamentary form of government and presidential form of government. And presidential form of government. Write down next point. The term democracy has been used in a wider context. Has been used in a wider context. Has been used in a wider context in Indian preamble. Encompassing ENCOMPASSING. Encompassing ENCOMPASSING. Encompassing political, social and economic democracy. Political, social and economic democracy. Political democracy लिखो. Every person has the right to choose. Has the right to choose. Has the right to choose their own government. Their own government. It is based on the principle of. It is based on the principle of. It is based on the principle of one person, one vote. One person, one vote. Next, socio-economic democracy. Socio-economic democracy. Socio-economic democracy. Write down. It means absence of social discrimination. Social discrimination and elimination of stark 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 economic inequality. Write down next point. B.R. Ambedkar observed at the adoption of the Indian Constitution. At the adoption of the Indian Constitution, that India is entering into a life of contradiction. India is entering into life of contradiction.
Yes, full stop. Write down while political democracy will be established, while political democracy will be established, while political democracy will be established, but socio-economic democracy while socio-economic democracy, देखो everybody do not ask me, है ना, you look at your neighbors, है ना, और नहीं नेबर ने भी लिखा है तो उसको छोड़ दो, लिख लो आगे जहां से बता रहे, फिर बाद में देख लेना, है ना, बिकॉज अदरवाइज द एंटायर क्लास गेट्स डिसरप्टेड. ठीक है, क्या लिखा है आपने? while socio-economic democracy is missing in the country. Full stop. He suggested that India should work towards establishing socio-economic democracy. India should work towards establishing socio-economic democracy because without it political democracy will not survive for long. Will not survive for long. Will not survive for long. Full stop. Write down. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है टू अशर इन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. कल मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स इज फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज सच एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए प्राइमरी प्रोविजन डीपीएसपी है, लिख लो. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स are meant to usher in USHER usher in socio-economic democracy. Socio-economic democracy. Fine. So this is with respect to these few key terms. Next key term that is mentioned under the constitution is liberty. Acha, republic is still missing. Republic likho. Republic. Democratic republic. Under republic, what do you mean by republic? Yes, head of the state is elected. It just simply means the head of the state is elected. That means the highest political offices are open to all, open to the common masses. There is no hereditary rule. देखो, in case of a democracy, है ना, in case of a constitutional democracy, there can be either a constitutional monarchy or a constitutional republic. ठीक है. In case of a constitutional democracy, it can be of two types. It can be a constitutional monarchy or
कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब मोनार्क या किंग और क्वीन is the head of state, is head of state. Yes, and in a case of constitutional republic, we find that the head of state is elected. Yes, so this is the idea. In case of a republic, the head is elected. But being a republic is not an indicator of are you a constitutional democracy or not. Give me a few examples of constitutional monarchy. UK is the prime most example. Fine, so this is the idea. Let's write down. इसी तरह से लिख लो constitutional democracy. Just draw it just as I have drawn it. Constitutional democracy can be of two types. Democracy can be of two types, constitutional monarchy or constitutional republic. Yes. And in case of constitutional monarchy, the head of the state is the monarch. Head of the state is monarch. And head of the state you have written as monarch, है ना, king, queen or the monarch. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो they enjoy hereditary possession. Yeah, it is a hereditary possession. Hereditary possession. Yes, they enjoy a hereditary possession. In case of a constitutional republic, the head of the state is elected. Elected. अब ये elected चाहे directly elected हो या indirectly elected. Directly elected किस country में है? US में है ना? US president is directly elected और indirectly elected India में, है ना? He is elected. You can also draw these two arrows, directly or indirectly. Directly for US and indirectly in case of India. Fine. So this is the idea. Write down. इसमें ही लिखो republic. Republic also means republic also means that all public offices are open to all citizens. Yes, there is no privileged class. Privileged class. Yes. इसी में नीचे लिखो. It also means that sovereignty lies in the people. And not a single person like king or queen. Fine. Next keyword is justice. Write down justice. Justice. अब justice किस तरह का? Social, economic, political. So social justice मतलब क्या? End of social discrimination.
इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या? एंड ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ग्रेट एक है ना, लार्ज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. एंड पॉलिटिकल जस्टिस क्या? वन पर्सन वन वोट. दिस इज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, है ना. सो दिस इज in terms of the concept of justice. And socio-economic justice is also together referred to as distributive justice. Write down. Write down. The Indian preamble talks about three types of justices. Yes, write down. In next point, social justice refers to equal treatment to all equal treatment to all, irrespective of equal treatment to all, irrespective of caste, gender, religion, etc. Economic justice put a hyphen, equal treatment to rich and poor, equal treatment to rich and poor. Rich and poor, semicolon, elimination of stark inequality, stark income या wealth inequality, income or wealth inequality. Next point, write down. Socio-economic justice together refers to together is referred as distributive justice, is referred as distributive justice. And last में political justice, put a hyphen, it means one person one vote. है ना, comma, equal political rights, one person one vote, equal political rights, comma, equal access to public offices. ना, basically no discrimination, है ना, no injustice in political sphere. हाँ, equal access to public offices. So that is the idea. Then is liberty. This idea of liberty. What do you mean by liberty? Freedom or absence of restraint. Write down. Liberty means absence of restraint. Or freedom. Restraint. R-E absence of restraint. Fine. इसी में लिखो. अच्छा, liberty, can it be absolute? There is nothing known as absolute anything. Yes, so liberty also cannot be absolute. Liberty is accompanied with
with reasonable restrictions to in fact ensure that all have equal access to liberty. Write down liberty. Next point, liberty is not absolute. Liberty is not absolute, rather it is accompanied with reasonable restrictions so as to ensure that liberty is accessed by all. So as to ensure that liberty is accessed by all. Yes. Next is this idea of equality. इक्वालिटी का मतलब क्या है? हाँ, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस है ना, या एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और एब्सेंस ऑफ privileges for a community or discrimination against a community or against somebody. Yes, that is what we mean by equality. Write down. It refers to absence of privileges in favor of few, and discrimination against few. Yes. Fine. So you find that this is what we mean when we talk about equality. Yes. And the preamble says equality of status and opportunity. Equality of status basically refers to absence of these special titles, है ना, which used to previously prevail, है ना. आप societal distinction recognize करने के लिए कुछ special titles दिया करते थे. Yes. So those should be abolished. Yes, all individuals are to be treated as equal, and there should be equality of opportunity for all. Yes. Next is fraternity. Yes. What do you mean by fraternity? Yes, there is a sense of brotherhood. Write down. It means a sense of brotherhood. Yes. Next point, write down. The idea of liberty, equality and fraternity. The idea of liberty, equality and fraternity has been borrowed from French Revolution. Yes. And what is the purpose? Write down the purpose of promotion. Of feeling of fraternity. A sense of fraternity. The purpose of promotion of
sense of fraternity. What is the purpose? हाँ, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और उसके अलावा है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दैट एवरी पर्सन इज ऑफ इक्वल वर्थ या इंपॉर्टेंट वर्थ. देयर इज डिग्निटी दैट नीड्स टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड ऑफ ऑल इंडिविजुअल. डिग्निटी का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट है ना. यू हैव अ, nobody should be used as an instrument, as a means for another, है ना. सबका अपना इंट्रिंसिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, which needs to be respected. Yes, and nobody can serve as means to somebody else. So वही है कि forced labor नहीं होना चाहिए, है ना. वर्क विदाउट पेमेंट नहीं होना चाहिए, वर्क विदाउट वेजेस नहीं होना चाहिए. सो वी विल रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल. And promotion of fraternity is also essential to ensure unity and integrity of India. Yes, so that India's territorial integrity continues to exist. Yes, write down. The purpose is in subpoint A, to promote, yeah, to assure dignity of individual. Yes, dignity of individual, put a hyphen, write down. The constitution respects unique identity of every individual, and no one should serve as a means to another. For example, the constitution bans the practice of forced labor or bonded labor. The practice of forced labor or bonded labor. The practice of forced labor or bonded labor. Yes. Second purpose is promotion of unity and integrity of India. Promotion of unity and integrity of India. Yes. Write down the word integrity. The word integrity was introduced through the 42nd Constitutional Amendment Act. Yes. Write down, इसी में लिखो है ना, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी में राइट डाउन द फ्रेज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी covers territorial and psychological dimension. Territorial and psychological dimension. Now what do you understand? Territorial we understand. It covers territorial and psychological dimension. Territorial we understand कि no part of India has the right to secede. है ना? कोई part of India cannot say that I want to become an independent country. I do not want to be part of India any longer.
Yes. So in fact, in the Indian Constitution, the very first article, Article 1 of the Indian Constitution says, India, that is Bharat, is union of states. That means states in India do not have the right to secede. So we want to ensure territorial integrity. ये इनफैक्ट फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और इसको हम कहते हैं कोर नेशनल इंटरेस्ट. हर देश का प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली सेफगार्डिंग सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ही होता है. Yes, so it is core national interest. We do not want territorial disintegration, territorial balkanization of India. ये सारे शब्द है जो हम यूज करते हैं. अब साइकोलॉजिकल क्या है इसमें? साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है? अस वर्सेस देम. वी वांट टू, वी कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. हमारा कोई डिमांड नहीं है ऑफ गोइंग forming a separate country, but then we believe we practice regionalism. We are from South India and these are North Indians. We are from northeastern India. I am a Gujarati, he's a Marathi. So there is this us recognizing distinct identity is different, but discriminating against one another, looking down upon somebody else, looking oneself with superiority complex. Yes. तो ये जो इस तरह का कम्युनलिज्म है ना, रिलीजियस आइडेंटिटी का मिसयूज करना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मिसयूज करना, तो दैट इज ऑल्सो सॉट टू बी प्रोहिबिटेड या सॉट टू बी eliminated through promotion of this feeling of fraternity. If we feel a sense of fraternity amongst all, then we will recognize, okay, you are a Hindu, I am a Muslim. Fine, that is done. But beyond it, oh, my interest is different than yours. Oh, my religious practice is better than yours. ये नहीं आएगा. Yes? So, through promotion of unity and integrity, they are trying to cover. और in fact, integrity शब्द लाने का एक कहते पर्पस ये था, ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन को कवर करना. ठीक है. तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एज वेल एज साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी शुड बी मेंटेन्ड. राइट इट डाउन. द फ्रेज दिस covers territorial and psychological dimensions. Write down Article 1 of the Indian Constitution. Underline Article 1 states that India is a union of states. That India, या तो लिख लो चलो, इंडिया दैट इज भारत. राइट इट डाउन. इंडिया कट डाउन है ना, लिखो आप. इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. इसको पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लो. दिस इज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस, सो वी शुड नो दिस नाउ. इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. Write down. It prohibits the right to secede, to Indian states. It prohibits the right to secede, मतलब to come out of India, to separate from India. Yes, full stop. Right, it prohibits the right to secede to Indian states. Full stop. Write down. It seeks to prevent territorial disintegration. Full stop. है ना. अब चेंज द पैराग्राफ. राइट डाउन. साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है? also the preamble seeks to curb the feeling of the sentiment of us versus them. The feeling of the sentiment of us versus them.
Yes, it it seeks to prohibit. It seeks to prohibit regionalism, regionalism, communalism, regionalism, communalism, yes, casteism, etc. etc. Fine. प्लीज बी केयरफुल, हमने कम्युनिज्म एक रेफर किया था और ये है कम्युनलिज्म. ठीक है, कम्युनलिज्म इज misuse of religious sentiments for political gains, generally for few, you know, for the benefit of few. They misuse the religious sentiments of the people. Or communism is the ideology of Karl Marx. Fine. So with this we conclude the topic of preamble. Yes, and tomorrow we'll start with the discussion on the various constitutional features, है ना, of India. ठीक है, the general constitutional features of India. Fine. Fine then. Any doubts that you have that you want to ask me? Yes. हाँ. देखो, हाँ ठीक है, ही इज आस्किंग कि अभी न्यूज में चल रहा था कि इंडिया को इंडिया बोलना चाहिए या भारत बोलना चाहिए. देखो, ये एक डिबेट, ये पॉलिटिकल नेचर ऑफ डिबेट है ना. इनफैक्ट इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज डिसएग्रीमेंट, है ना, डिसएग्रीमेंट कि इंडिया को इंडिया बोला जाए या भारत बोला जाए. तो उन्होंने चूज किया टू कॉल इट बोथ एंड टू कोट शेक्सपियर, व्हाट इज देयर इन द नेम. ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो भारत हैज द ओरिजिन, है ना, वी बिलीव कि इसका ओरिजिन मोर इंडियन है, भारत वंश एंड भारत का आइडिया है. यस, एंड इंडिया इज द टर्म यूज्ड बाय फॉरेनर्स फॉर इंडिया. यस, तो ये जो डिबेट था वो पॉलिटिकल इन नेचर था. देखो, तो इस पे भी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, कुछ है ना, वी कैन नॉट मेक अ कमेंट ऑन इट बिकॉज पॉलिटिकल नेचर ऑफ द डिबेट. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तो नो इंडिया प्रोग्राम, कितने सारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो सडनली देयर प्रॉब्लम विथ द टर्म इंडिया. तो है ना, इट इज अ पॉलिटिकल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल नेचर ऑफ द इशू. और अब तो इट हैज डाइड डाउन ऑल्सो समवेयर. तो इस पे अभी कमेंट नहीं करेंगे. फाइन, थैंक यू. What is the difference between liberty and freedom? From our perspective, एक ही है. ये synonymous शब्द है जिनको आप ओवरलैपिंगली यूज कर सकते हो. लेकिन एक आइडियोलॉजी में अब क्या हुआ, आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो मार्क्सिस्ट है, जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हैं, वो लिबर्टी शब्द यूज करना पसंद नहीं करते. क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म ने इसको, है ना, इस पे एम्फेसाइज किया है, लिबर्टी पे. तो जो मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट स्कूल हैं वो लिबर्टी को ही डिनोट करने के लिए यूज करते हैं शब्द का फ्रीडम. ठीक है, अदरवाइज फॉर इन कॉमन पार्लेंस एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस. बट अब क्या हो गया कि कम्युनिस्ट को अब बोलना था लिबर्टी, लेकिन वो कैसे बोले? अगर लिबर्टी बोलेंगे तो, है ना, द वर्ड हैज बीन अपसर्व्ड. वो मोनोपोली है लिबरलिज्म का, तो ऐसे लगेगा कि वो लिबरल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं. तो उन्होंने लिबर्टी की जगह फ्रीडम शब्द का यूज करना शुरू किया. बट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव लिबर्टी एंड फ्रीडम इज वन एंड द सेम. फाइन. वो अलग चीज है. वो अभी फिर से आई विल नॉट गेट इनटू. वो हम प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करते हैं. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना है हमें. अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे दे? सपोजिटली इन दिस क्लास आई डिस्ट्रीब्यूट 10 rupees टू ईच वन. यस, नाउ देयर माइट बी सम हु आर कैरिंग 20 rupees in their pocket. There might be some who have certain debt to be paid. There might be some who are historical, yeah,
some disadvantage is there that they might be supposedly say physically handicapped, तो उनको 10 rupees does not carry equal worth for all. तो अभी जरूर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड. इक्विटी अलग चीज है ना, सब कोई सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे है. ठीक है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए, सबको एक लेवल पे लाने के लिए हम रिजर्वेशन देते हैं टू द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड सच एज एससीज एंड एसटीज. समझ में आया? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रियल लाइफ में कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे? अगर हम सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए, फिर हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है. अदरवाइज ऑल ऑफ अस हैव द ऑप्शन टू स्टडी इन प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी सबके पास है, लेकिन पैसे तो होने चाहिए सबके पास इक्वल, ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर सके. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल एट लेवल प्लेइंग फील्ड थ्रू रिजर्वेशन. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया. तो रिजर्वेशन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड को दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एससीज एंड एसटीज. फाइन. एनीथिंग एल्स? Fine, then that is it for today. We meet again tomorrow. Fine, thank you.